Friends, we already know the situation of health in Indian tribes, and number of reports are there. But the latest one, and of course, the authentic one, CAG report about the situation in Himachal, that was presented in this winter session of Vidhan Sabha over there. And what do you find? Extra availability of doctors and specialists in Shimla and Solan districts, and almost 100% shortage in tribal districts. Bureaucrats, doctors, they never want to be posted in tribal areas. There was an overall shortage of 41.47% in human resources across all categories in government health institutions in the state as on March 31st, 23. In the doctors category, shortfall was from 9 to 56%. Shortfall of doctors was the least 7% in Hamirpur district and highest 57% in Kinnaur, which is a tribal district. Hmm? There is no dearth of doctors in Kullu. कुल्लू है, शिमला है, मनाली है, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट भी हैं वेल डेवलप्ड हैं. द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स lowest 14% in Una district and highest 42% in Jamba and Sirmaur. Again, Sirmaur, Bharmor and further north, they are tribal districts. There was 30% access availability of doctors in CHCs of Solan district, community health center. The shortage of doctors in primary health centers, lowest 5% in Solan district and highest 33% in Sirmaur district. हर जगह कहीं भी देखो. Then medical specialists, even in the urban areas it is there. But in the case of district hospitals, there was 33% access medical specialists in Shimla, 89% shortage in the district hospitals of Lahore and Spiti. Civil hospitals of Kinnaur and Lahore and Spiti tribal district, there was 100% shortage of medical specialists. ये तो हाल है. और लाहौर में यू हैव ओनली 2 OPDs पूरे डिस्ट्रिक्ट में. द CAG रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, शिमला में तो खैर हाईएस्ट है ही. इन द 7 डिस्ट्रिक्ट्स besides the tribal Kinnaur and Lahore and Spiti had 69% shortage. In CHCs, when measured against the Indian public health standard, 6 districts of Himachal had 100% shortage of medical specialists, 5 districts had 90% shortage, and 1 district had 70%. ये सारी की सारी जो CAG रिपोर्ट कह रही है, क्या उसका कोई यूज भी होगा? क्या कह रहे हैं? ICU सर्विस नहीं अवेलेबल है. 149 आउट ऑफ 773 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं. 341 means 3 crore 41 lakh quantities of drugs and consumables procured by the state health department had expired during 1917 and 21 period at primary and secondary levels, and significant shortage of beds. And this is not the isolated case. If you take parallels in Uttarakhand also, in the remote areas, Pithoragarh, Uttarkashi and Chamoli, the situation is no better. And that is why people at the high altitude, they start migrating to the lower ones. And you have ghost villages. More and more villages in the north, they are becoming ghost villages, and China claims those villages as their own. So in terms of national security, in terms of health, आप कहते हो हम 81 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं. खाने में क्या है वो तो बताओ. लेटेस्ट रिसर्च इज टेलिंग यू दैट 25 to 35% जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हमारे व्हीट एंड राइस की, वो कम हो चुकी है. एंड बाय 2045 वो खाने लायक नहीं रहेंगे. कर्टसी ऑल द पेस्टिसाइड्स जो आप डालते हैं, खाद भी और बाकी चीजें. So if CAG gives a report of this kind, what is the use? CAG फुल फॉर्म क्या है?
Controller and Auditor General. But he is left with becoming only Auditor General. सीएजी का काम प्लान इम्प्लीमेंटेशन से शुरू होना चाहिए, शुरू होने से पहले, और खत्म होने के बाद वाला भी होना चाहिए। तो सीएजी जो है उसकी अगर आपने हाथ बांध के रख दिए हैं तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज? ऑब्वियसली इट इज सेंटर। आप क्लेम करिए कि आप विश्व गुरु बन रहे हैं आप, लेकिन ये जो भूखे मर रहे हैं, स्टंटिंग की जो हालत है, एक तरफ तो ओबिसिटी बढ़ रही है, एक तरफ अंडरवेट बढ़ रहे हैं, नॉर्मल हेल्दी लोग तो है ही नहीं। तो उसके लिए तो एक ही तरीका है, ऑब्वियसली यू नीड न्यूट्रिशन। एट द सेम टाइम हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। सो आई विश द गवर्नमेंट टेक्स ए डिसीजन, हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर एक में आधा घंटा एक्स्ट्रा होना चाहिए। एंड एट दैट टाइम द ऑफिस मस्ट बी क्लोज्ड and all the students and teachers and employees including directors हाफ एन आवर उनको पैदल चलना ही है ग्राउंड में, बना दें अगर, तो करोड़ों अरबों रुपए की मेडिसिन जो है वो बच जाएगी, हमारी हेल्थ स्टेटस हमारा यूं ही बढ़ जाएगा। इतनी छोटी सी बात सरकार को समझ नहीं आती। आपके प्रधानमंत्री अगर योगा कर सकते हैं और एक दिन के लिए इंटरनेशनल योगा डे मना दिया तो क्या हेल्थ सुधर जाएगी उससे? We need very concerned steps. Unless we are health conscious, बिना हेल्थ के कुछ नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, कोई भी काम नहीं होता। So I wish that government takes a firm conclusion, makes a policy on how the better health can be provided to the nation, so that nation can really grow. फास्टर हो जाएगी ग्रोथ, सोचिएगा।